The thing is that when we have yesterday from we where we left out, you had the load talks. We defined the types of load talks what we have. Generally, these load talks are defined by certain equations that are related by that have omega and t relationships and different parameters that are involved in it. It may be a linear equation, it may be or a linear relationship between t and omega. It may be an inverse relationship. It may be an inverse square or a direct relationship, directly proportional relationship, a square relationship, कुछ भी हो सकता है, quadratic हो सकती है. ठीक है, there are many things in this. You have different types of loads, and you have different types of relationships in between omega and t. So first of all, we check out the characteristics of that load, and then we choose a motor drive system for it. Okay, so that is why in the coming lectures we'll be seeing that how these load talks are defined and are further defined in fact. अभी तो खाली हमने इसका introduction दिया है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. ठीक है. They will be further defined by equations and you will see that how the characteristics will be matched with the motor characteristics. Remember that the load characteristics can never be altered in case of drive. And wherever you have any load, you have to run that load. You cannot alter that characteristics or that requirements. ठीक है, अगर चार आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो चार को ही जाना है. ठीक है, पंखा अगर 300 आरपीएम पे चलना है तो 300 पे ही चलना है. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप काम चला लीजिए 400 आरपीएम से, आप काम चला लीजिए 200 आरपीएम से. So it is not like that. So whenever you define any load characteristics, it means they are firm and only the motor characteristics are to be matched to the load characteristics. So the motor characteristics are to be altered in all the cases. ठीक है, तो still going back to our basic equation what we had. ये वाली एक सिंपल मोटर लोड सिस्टम था आपके पास and you had a torque balance equation like this of this equivalent motor load system. T is equal to TL plus J d omega m by dt. Okay, so for normal cases what we have is that when you have the system to be at rest, so what happens is that you apply a T, that is the motor torque, and that is in direction opposite to the load torque TL, and then the motor load system picks up the speed depending upon the value of J and also depending upon the value of acceleration, that is the rate of change of angular speed d omega m by dt. Okay. So when this motor load system picks up a speed and reaches to a steady state value, in that case omega m has reached a certain value from 0 say up till certain rpm, hundreds of rpm, and now the system is working stably. And at that point of time you don't have d omega by dt term, so because that goes to 0, आपके पास acceleration जो है d omega, that means the change in speed with respect to time goes to 0. So that is why T becomes equal to TL in the conditions of equilibrium. ठीक है, ये आपके पास and TL की हमने कल बात करी थी. So we had TL to be a sum of the useful work plus the different types of waste torques what we had, and all this is to be covered with the motor torque. ठीक है, motor torque को ही ये सारे torques drive करने पड़ते हैं. ठीक है, now remember this equation in mind. We have the thing is that now in steady state calculations, in steady state conditions the calculations are quite simple. How? Because you have different values of speed, you have different values of torque, so you can simply calculate power. Power कैसे निकालते हैं? आपका P is equal to T omega. ठीक है, टी ओमेगा है तो टी की एक डेफिनेट वैल्यू है, ओमेगा की एक डेफिनेट वैल्यू है, तो आपने इनपुट पावर निकाल ली उससे. सो दैट इज ए सिंपल जॉब. नाउ व्हेन ओमेगा इज चेंजिंग, टी इज आल्सो चेंजिंग विद ओमेगा. सो व्हाट हैपेंस फॉर दैट मच ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच दीज वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड टी आर चेंजिंग. ठीक है, ये एक स्टेडी स्टेट से दूसरे स्टेडी स्टेट पे जाने पे या रेस्ट से, आपके पास सिस्टम जो था रेस्ट पे था और एक करंट रनिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के लिए जो है वो स्पीड चेंज होती है, टॉर्क चेंज होता है. दैट मीन्स यू हैव अ ट्रांजिएंट कंडीशन.
So how to calculate? The thing is that these transients obviously require power because you are going to accelerate. You are going to accelerate from using the power that is drawn from the source. And when you calculate the energy requirements or the power requirements, in that case, particularly energy requirements, in that case, the energy is spent in that much of period of time in which the motor load system was picking up speed, say in this case. So that is also to be provided by the motor. And in fact, that is to be drawn from the source or the electrical source, what you have connected. So, steady state calculations of energy and power are quite simple. Power is equal to energy is equal to power into time. ठीक है, power is equal to T into omega. ये सारी आप 6th क्लास में पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये सारी रिलेशनशिप्स होती हैं. तो जब एनर्जी कैलकुलेशंस करेंगे या पावर कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए तो आप आसानी से कर सकते हैं. कांस्टेंट वैल्यूज़ का मतलब इनिशियली जब वो जीरो पे था तो सब जीरो था. उसने एक स्पीड पिकअप कर ली और उसके बाद उस पर जो टॉर्क है उसे आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, पावर बन गई. उसे टाइम से मल्टीप्लाई किया, कितनी देर में हुआ, कितनी देर तक चल रहा है, तो वो चीज़ जो है वो एनर्जी बन गई. But still, and that energy is drawn from the source, but still in the transient conditions in which the machine motor load system has picked up speed or reduced the speed अगर d omega by dt negative है. So in that case, in all those cases, that energy requirement is also to be met by the source or the motor. So that is why the energy calculations of that motor load system for those transient conditions is also required. ठीक है. So for that purpose, what we do, we use this same equation and this we manipulate it. यानी इधर उधर हम करते हैं ऐसे equal to के like this. ठीक है. तो ये हमारे पास वही इक्वेशन है जो आपके पास ये वाली है. ये जो t जो जेड ओमेगा बाई डी टी. ठीक है. तो हमने ऐसे जो है वो मैनिपुलेट करके इन टर्म्स में ले आए. ठीक है. सो यहाँ जो है वन थिंग डिफरेंट इज रिटन फ्रॉम देयर इज दैट t is written as a function of omega. ठीक है. सो तो ये तो होता ही होता है. इन एवरी रिलेशनशिप यू हैव थिंग्स लाइक दिस एंड these are the functions of drive speed omega. So now if you want to calculate the time, ठीक है, तो सिंपल आप एक dt है आपके पास, डिफरेंशियल टाइम दिया हुआ है आपको. ठीक है. तो उसे इंटीग्रेट कर देंगे विद इन सर्टेन लिमिट्स. एंड हाउ यू चूज दोज लिमिट्स, स्पीड 1 to speed 2. ठीक है. You have taken it to be speeding up from rest to a certain speed, so omega m1 will be 0 up till omega m2 to a certain rated speed or whatever it is, whatever the speed it attains. So this is how you calculate the time for which the system was in transient condition. ठीक है. ये हमारे पास टाइम आया. हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है. हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर चाहिए और टाइम चाहिए. ठीक है. तो P सबसे पहले हमें E चाहिए था. E के लिए जो है हमें P और T चाहिए है, यानी पावर टाइम. पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा एंड T कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. ठीक है. सो देन यू हैव this relationship and this relationship can be plotted like this. So if you see जो हमारे पास t है, dt है, एक स्मॉल पोर्शन लिया था हमने इसका. ये आपके पास इक्वेशन, अगर इस dt को हम इस पे प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो ये ऐसे करके कर्व बनेगा. दिस इज अ सिंपल स्क्वायर रिलेशनशिप टाइप ऑफ थिंग. ठीक है. तो व्हेन यू इंटीग्रेट इट विद इन सर्टेन लिमिट्स, यानी हमने यहाँ ओमेगा 1 से ओमेगा 2 लिया, तो दिस शेडेड एरिया कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ t ऑन दिस एक्सेस. ठीक है. And then when you have the value of t, you can simply calculate the value of the energy that is dissipated in the motor during that transient operation. ठीक है. And that energy is equal to I square r into dt, and t is this being integrated in the limits 0 to t. जो आपने ये वाला t कैलकुलेट किया है यहाँ पे, टाइम फॉर दिस ट्रांजिएंट ऑपरेशन. ठीक है. So you can have the value of the energy dissipated in the rotor windings, in the motor windings during that transient operation. This is a very important feature over here. Why? Because this makes up to the
heat that is produced inside the machine during the running period. ठीक है, रनिंग पीरियड के लिए भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास अपना एनर्जी लॉस इनसाइड द मोटर, बट स्टिल उसके बावजूद भी आप जो हैं ट्रांजिएंट पीरियड्स के लिए इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं, वेयर आर इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ योर मोटर, वट एवर इट इनकाउंटर्स। टोटल आर होती है ये, जैसे आपके पास स्टेटर और रोटर है, तो आप पहले उसे रोटर को रेफर करके ले आते हैं स्टेटर में, तो टोटल रेजिस्टेंस होती है मोटर की है इन दैट केस। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस अलग रहती हैं। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर कैलकुलेटिंग द कंडीशंस फॉर दैट, for transient values of energy that is spent over there, how much energy is lost over in that period, and how the power is calculated for that much of period. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? एक हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो थोड़ा सा बड़ा है, that is why I don't want to start it today. The only thing that remains over here is that you have to, in all the cases, remember this. This equation is a very important equation, that is the dynamic equation of a motor load system. And in the next class, we'll be studying that how the system is considered to be stable in certain conditions using the speed torque characteristics of that motor load system. First, we'll be talking about the matching of the motor load characteristics in the speed torque plane, and then we'll be talking about the stability analysis, that whether the characteristics which has been matched are actually or they actually yield to a stable operating point or not, simply by judging the characteristic properties on the T omega plane. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें जो आज हमने बताया है? Anybody? Okay, thank you then. Thank you. सर हेलो। हाँ बताइए। सर कल जो आपने सर एक मैकेनिकल टॉक जो बताया था, तो सर ये वो आज जो बताया टी स्मॉल एल, तो दोनों सेम है या अलग अलग है? रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये टी स्मॉल एल जो है और जो तुम्हारा ये देखो, ये वाली इक्वेशन जो है ना तुम्हारी टी एल, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये टी एल जो है, दिस इज द टोटल लोड टॉर्क इंक्लूडिंग द यूजफुल वर्क प्लस ऑल द लॉसेस। ठीक है, तो जो मोटर को आपके चलाना है, जो आपके पास ये मोटर ड्राइव कर रहा है ऐसे टी, तो ये टीएल में सारे टॉर्क्स हैं, यानी इसमें लोड एक्चुअल आपके पास यूजफुल लोड टॉर्क भी है, और जो सारे लॉसेस हैं इसमें फ्रिक्शन के, विंडेज के, ठीक है, स्टिक्शन के, ये सारे लॉसेस जो हैं ये सारे मौजूद हैं इस स्मॉल टीएल में, और जो मोटर को चलाना पड़ेगा वो स्मॉल टीएल को चलाना पड़ेगा, एंड दिस स्मॉल टीएल इज एक्चुअली इक्वल टू the useful torque, load torque plus the losses. ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।